Welcome to Dynamic Foundry Group. I am Sandeep Kulkarni. Welcome you to this small video section. On today's topic, what we are taking is about austemper ductile iron, that is ADI. ADI is one of the special branch of ductile iron, that is nodular iron. Recently, it is got developed, and now it is very popular in many countries, and most of the customer are now requesting to make this specific grade of ductile iron. It's called austemper ductile iron. So let us understand the basic about this grade. जैसे मैंने कहा कि ये डक्टाइल आयन की एक ग्रेड है और इसमें बेसिकली हीट ट्रीटमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ग्रेड के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में जानते हैं। इसीलिए एक कोशिश है कि इस ग्रेड के बारे में जो बेसिक जानकारी है उस जानकारी को आप तक पहुंचाए, ताकि आप इस ग्रेड के बारे में जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में आपको पता चले और आप इस ग्रेड के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिले। इस उम्मीद के साथ, इस इरादे के साथ हम इस वीडियो को लेके आ रहे हैं। ऑस्टेम्पर डक्टाइल आयन बेसिक इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम इसके बारे में देने वाले हैं। जैसे मैंने पहले बताया, एक ग्रेड बहुत आजकल बहुत पॉपुलर हो चुकी है और बहुत सारे कस्टमर इस ग्रेड के बारे में हमें पूछते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ऑस्टेम्पर डक्टाइल आयन इज अ फॉर्म ऑफ डक्टाइल आयन दैट एंजॉयज हाई स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स माइक्रोस्ट्रक्चर कंट्रोल्ड हीट ट्रीटमेंट। तो ये बेसिकली डक्टाइल आयन की ऐसी ग्रेड है जिसमें स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी दोनों भी एक साथ आपको बढ़ के मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जहां पर स्ट्रेंथ होती है वहां पर इलोंगेशन या डक्टिलिटी कम होती है, जहां इलोंगेशन होता है वहां पर स्ट्रेंथ कम होती है। लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें आपको हायर साइड में मिलेगी बिकॉज ऑफ द हीट ट्रीटमेंट, कंट्रोल्ड हीट ट्रीटमेंट। यहाँ पर इंपॉर्टेंस है वो हीट ट्रीटमेंट का है। कंट्रोल हीट ट्रीटमेंट के कारण आपको ये दोनों चीजें एक साथ मिलती है। और ADI is material produced through a specialized heat treatment process applied to a base ductile iron. The ADI process involves high temperature homogenization of components followed by isothermal quenching into molten salt baths at evaluated temperatures, typically 240 degree to 400 degrees. तो बेसिकली इसमें होमोजेनाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स होता है, हीट ट्रीटमेंट होती है, आइसोथर्मल क्विंचिंग होता है जो कि मोल्टन बाथ सॉल्ट बाथ्स में किया जाता है। इसमें नॉर्मली टेम्परेचर 240 से 400 डिग्री तक रहता है। ये बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इसके डिटेल्स बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल है। स्पेशली हीट ट्रीटमेंट साइकिल भी बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल है। हीट ट्रीटमेंट करने वाले, एडीआई की हीट ट्रीटमेंट करने वाले बहुत कम लोग हैं। जो लोग हैं उनसे वो इंफॉर्मेशन ज्यादातर आउट नहीं हो जाती है, बाहर नहीं आती है। तो इसके बारे में बहुत कम लोगों के पास पुख्ता जानकारी है कि किस तरह एग्जैक्टली हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस या उसकी साइकिल्स रन की जाती है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर हम कोशिश करने जा रहे हैं कि थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी तो आपको दी जाए, जिसके वजह से आप इस हीट ट्रीटमेंट, इस डक्टाइल आयन के ग्रेड के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करें, जिसके बाद आप कस्टमर के साथ थोड़ी कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं या फिर कोशिश कर सकते हैं कि इसके बारे में और जानकारी ले और इस ग्रेड को बनाएं। Austemper ductile iron is a form of ductile iron that enjoys high strength and ductility as a result of its microstructure control to heat treatment. जैसे मैंने पहले बताया, Austemper ductile iron, austempering is a specialized heat treatment process used to fortify metals, and it amplifies several of the desirable properties ductile iron casting already possess, including strength, uh, aberration, resistance and toughness. तो यहाँ पर strength, एब्रेशन, रेजिस्टेंस एंड टफनेस, ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको मिलती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस डक्टाइल आयन में कि ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको मिलती है बिकॉज ऑफ द ऑस्टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट साइकिल दैट वी आर कैरिंग आउट ऑन द डक्टाइल आयन, बेसिक डक्टाइल आयन मेटलर्जी। Austemper ductile iron is a strong, light, and wear-resistant material. So, basically, what is the difference between a ductile iron and Austemper ductile iron? तो इसमें ये बता सकते हैं हम कि it is a Austemper ductile iron is a strong, light, and wear-resistant material.
तो ये बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन लाइट भी है और वेल रेजिस्टेंस भी है। एरिया इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बेटर डैम्पर ऑफ वाइब्रेशन देन स्टील। तो यहाँ पर डैम्पिंग प्रॉपर्टीज भी है जो स्टील से बेहतर है। द अमाउंट ऑफ सर्टन एलिमेंट्स को इसमें ऐड करना होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि ऑस्टेम्पर डक्टाइल आयन आपको अगर पाना है तो बेसिकली आपको डक्टाइल आयन बनाना है और उसके बाद इसके ऊपर हीट ट्रीटमेंट करना है। लेकिन डक्टाइल आयन बनाते समय you have to add some specific element like copper, nickel, and moly would be specified by the heat treated for improving heat treatability. So heat treatment को बेहतर बनाने के लिए, heat treatment के परफॉर्मेंस को और ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको डक्टाइल आयन में, बेसिक डक्टाइल आयन में कॉपर, निकल और मॉली जैसे एलिमेंट को ऐड करना होता है। सो एरिया स्टार्ट्स विद अ गुड डक्टाइल आयन। बेसिकली हम इस बारे में बात करें कि एरिया इज स्टार्टिंग विद अ गुड डक्टाइल आयन। अगर आपको एरिया बनाना है तो यू हैव टू मेक गुड डक्टाइल आयन फर्स्ट। इट इज वेरी इसेंशियल, क्योंकि सिर्फ ही ट्रीटमेंट करके आप सोचेंगे कि मैं अच्छा डक्टाइल ऑस्टियोपोर डक्टाइल आयन बना लूंगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हीट ट्रीटमेंट साइकिल की इफिशियंसी डिपेंड करेगी आपके डक्टाइल आयन के क्वालिटी के ऊपर, उसके बेहतर परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आपका डक्टाइल आयन अगर सही नहीं है, बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, उसके प्रॉपर्टीज अगर सही नहीं है, तो आपकी हीट ट्रीटमेंट भी उतनी बेहतर नहीं होगी, और जो ऑस्टियोपोर डक्टाइल आयन जो एरिया आप बनाने जा रहे हैं वो भी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो एरिया स्टार्ट विद गुड डक्टाइल आयन। So what is good ductile iron? Let us understand that first. First is a consistent chemistry. Chemistry should be very consistent. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हीट दो या तीन हीट अलग अलग हम पोरिंग करेंगे तो उसके केमिस्ट्री में बहुत सारा वेरिएशन हो। अगर वो वेरिएशन रहेगा तो हीट ट्रीटमेंट साइकिल को आपको रन करने में मुश्किल होगी, हीट ट्रीटमेंट साइकिल को डिजाइन करने में मुश्किल होगी। इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपका जो डक्टाइल आयन है, इट शुड हैव अ कंसिस्टेंट केमिस्ट्री। सेकंड इज कंसिस्टेंट परलाइट एंड फेराइट रेशियो, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप हीट ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका परलाइट और फेराइट रेशियो जितना कंसिस्टेंट रहेगा, जितना सही रहेगा, उतना ही आपका हीट ट्रीटमेंट साइकिल बेहतर वर्क करेगा। अगर ये सही नहीं होगा तो आपका हीट ट्रीटमेंट साइकिल सही वर्क नहीं करेगा और आपको जो एरिया की प्रॉपर्टी चाहिए वो नहीं मिलेंगी। Minimum 100 plus nodal count should be there. So 100 plus nodules per square mm should be, nodal count should be there at least minimum. So that is another important requirement is there. The 90% nodularity is another very important requirement. अगर आप 75, 80, 85 nodularity के साथ जाओगे तो you will not get good quality of osteoporotic ductile iron. So you have to ensure that your nodularity should be minimum 90%. Less than 0.5% carbide and inclusion. So carbide and inclusion also makes a huge effect on the heat treatment efficiency. So the carbide percentage should be less than 0.5% and there should not be any inclusion as well. So another important factor is less than 1% porosity and micro shrinkage. So your casting should be very much consistent with chemistry, as well as it should be good enough with good methoding should be there. There should not be porosity or micro shrinkages. The soundness of the casting should be good. That is also another requirement for making good quality of osteoporotic ductile iron. So you have to get good quality of ductile iron first to get good quality of osteoporotic ductile iron. So this is the base chemistry that is tentatively expected. I have given it here. The carbon should be 3.6 plus minus 0.2. Silicon should be 2.5 plus minus 0.2. It is the final chemistry. So you have to work out your own bath chemistry based on this. Manganese should be 0.35 max. Magnesium should be not 5 max. Copper is very important, not 0.8 max. So you have to add copper here. Nickel should be 2% max. Moly should be 0.3 max. So copper, nickel, moly, as I told you earlier, are the three important elements you have to add in your ductile iron base chemistry to get good quality of osteoporotic ductile iron. Sn should be 0.02, phosphorus not 4, sulfur should be not 2 max as usual. Chromium should be not, it is written here is 0.1 max, but I prefer to have
0.05 because you have a very important reminder that your carbide should be less than 0.05% max. So your chromium should be not 5 max essentially. Then other elements, as I know, the trace element should be in double digit most of the time. So this is the base chemistry what we are expecting. Then effect of alloying elements, the for hardenability purpose, we have to add copper, nickel, and moly, as I already told you. Manganese segregates the regions between the graphite nodules and also delay osteoporic reaction. Alloying with copper increases the elongation and impact energy, but decreases the strength of osteoductile iron. So copper is also very important to control the elongation as well. Nickel is added up to 2% to improve the strength of the metal. Then moly is added as a potent hardenability agent as well. So these are the effect of alloying elements in ADI. Then we have some important grades which have been derived. I have derived from it. It's 850 by 10. That is tensile is 800. Elongation is 10%, and typical hardness should be 269 to 321 BHA. Then 1050 by 7. 1050 is the tensile strength. 7% is the elongation, and 302 363 is the typical hardness. 1200 by 4 is another grade. 1200 is the tensile, 4% is the elongation, 341, 444 is your BHA is your hardness. Then 1400 by 1, 1400 is the strength where 1% elongation is required. 366 to 477 BHN is the hardness range. And another range is another grade is 1600. The strength is here the grade is typically showing the hardness of 440 to 555 BHN. So these are the typical popular grades in osteoductile iron. If you are going for 10% elongation, then you know that it should be 400 or 450 should be the tensile strength. But here 10% elongation you are getting with 850 tensile strength. So your elongation remains same where your tensile strength increases. So this is a very, very important factor that I am talking about is you are getting both tensile strength as well as elongation, both in higher side in this osteoductile iron because of the heat treatment we are carrying out on the ductile iron. So this is very important. These are some of the photographs of application in ductile iron, the parts which are being prepared or made in ductile iron for getting these desirable properties. Osteoductile iron is a ductile iron which undergoes an isothermal heat treatment. The optimal microstructure of ADI consists of graphite nodules surrounded by acicular ferrite and high carbon content austenite, which called as aciferrite. So these are the some of the microstructure photos which you can see. The microstructure. This is before etching. This is after etching. So these are basically some of the microstructure photos you can see in the osteoductile iron. So this is a very small basic information about ADI. I hope you understand it. It required a good quality ductile iron with copper, nickel, and moly, and then you have to go for proper heat treatment. Heat treatment cycle, as I know, as I told you, it is not very much defined by the suppliers or heat treatment vendors to the in the market. So it is little bit a suspense kind of thing, but there are the people who can do this EDI heat treatment cycle as well. So once you carry out this basic chemistry, you carry out a good quality of ductile iron, you can go for this heat treatment cycle to make desired grade of the ADI. So this is about the ADI, the basic information which I have shared with you for your ready reference, and I hope this will help you to get touch in with the customer for better
better conversation for while dealing with the ADI product as well. So this is all about ADI. Thank you very much for patient hearing, and I hope this will help you in getting some good orders in ADI as well. So thank you very much for patient hearing.